A very good afternoon to all. A very good afternoon to all. How are you guys doing? Give me just a second. I'm just figuring out what is happening right now with me. Hey, Peter One. Hey, Kushi. Okay. Am I live? Like, I don't know. Things are really confirmed. Not. I'm not really fine now. I feel like that. Hello. Okay. So, how are you guys doing today? Hi, Kushi. Hey, good afternoon, everyone. Okay, I'm so sorry for late. I was facing some issue with the internet and stuff. I mean, Dodo Kushi, yeah. So, are you guys facing any kind of issue or lag? Okay, probably yes, you guys are. So today, what are we going to do today? Basically, today we are going to see how to use your LibreOffice. Anyone knows which topic it is? LibreOffice. Okay, I'm so sorry for late. I was facing some issue with the internet and stuff. Give me a second. Are you guys facing any kind of issue or lag? Hello. I mean, are you guys able to see my screen? Clear screen.
So which topic we are going to take today? Any guesses, any idea, any questions? Okay, so today basically we are going to see how to use LibreOffice. What is the name of the topic? LibreOffice. Basically the Impress. So in this class we are going to see how to make a presentation very good. Okay, कोई भी. So how to start a LibreOffice in the Windows. So in the LibreOffice, either you guys can have directly this shortcut icon. ये डायरेक्टली शॉर्टकट आइकन होगा तुम्हारे पास, इस पे क्लिक करोगे एंड क्लिक ऑन इट. सो तुम्हारा LibreOffice ओपन होगा. So inside it, you guys can choose, you have to open an Impress presentation like that. This can be so let's see how to start on the Windows application. So click on the Windows, search for the LibreOffice. Inside the LibreOffice, you would be having the LibreOffice Impress. So as soon as you click on LibreOffice Impress, your LibreOffice Impress would be opened. I'm not going to repeat all those parts and again. Like I have shared you guys, okay, this is the title bar, this is the menu bar, this is the standard toolbar, this is the formatting toolbar, these are the properties. Yeah, almost the same thing. Beta 1, we don't have a coding so here. So yeah, so that's how your Impress would start. Okay, so as soon as you start something, you will get the do you know tips basically every day. So cannot see all the text in a sense, expand the input line in the formula bar and you can explore. So this is the tips you will guys can get to know. So whenever you open a LibreOffice, it will ask you to choose a template you want to use. What are the templates? Templates are built in basically drafts, or you guys can say a structure of the presentation which can be used just to editing stuff. Like तुम्हें पूरी की सारी चीजें LibreOffice में स्लाइड्स की सारी चीजें मिली हुई मिलेंगी, बनी हुई. अपना रिटर्न पार्ट चेंज करना है. So yeah, that is how basically we would be opening. Now I'm not going to choose any of these templates. We'll see templates in the later part of the class. So what are the type of a presentation? What categories do you want? Do you want to have a media wiki? Do you want to have a presentation styles? Is a business documents? Whatever it is. So it would basically filter out things whatever you want. For example, I just use business correspondence. So उसमें कुछ होगा, मीडिया विकी में कुछ होगा, प्रेजेंटेशन में कुछ होगा, styles में कुछ होगा. So all these things would be over here whenever you need it. So I'm not going to choose any template right now, so I'm just cancelling it. So this is the basically the title slide, the basic the default slide which appears onto the screen. So instead of page number, you would be able to see a slide number over here.
तुम्हें यहाँ स्लाइड नंबर दिखेगा. Okay. Now here are your different type of the slides. For example, this is a blank slide, so I just make it a blank. This is a title slide. Basically you have to add a title and the subtitle or the text to it. Title on the content. Content what you guys can add would be over here. Title and the to content. Just title. Center text. The text should be at the center of the slide. Title and the three content. Title and the two content. Title and the three content. Over a content. Content over content. 4 content. 6 content. I have shown you guys. No, I have not shown. So these are the different type of slides you guys can use whenever you want to. For example, if I want to show the food, so अगर मैं यहाँ food लिखता हूँ तो यहाँ मेरे पास अलग अलग food की pictures add कर सकता हूँ. I can add 6 different food का pictures. So either a graph or a food. So I can add those things. Okay, that's how basically one can add the content depending upon the use. अभी I don't have that pictures. मेरे पास वो सारे pictures नहीं है. Like खाने के pictures नहीं है. So see, अगर मैं ये एक picture add किया, so वो picture आ गई. Am I making sense? Like चीजें समझ रही हैं? So these were the layouts. What is layout? Okay, Khushi. So that is the layout. But this layout is both totally depending on तुम्हारा कौन सी slide को तुम्हें change करना है. For example, right now I have just one slide. So in adding more slide, I have a slide menu. Inside it, we would be going with a new slide. Inside it with a new slide. ठीक है? So अभी मेरे को इसको change करना है. I don't want this type of a layout. I want blank layout. मेरे को यहाँ blank नहीं. मेरे को यहाँ चाहिए title and the blank. So I just make it sure कि ये title की slide ऊपर जाए. So what I have to do is drag this down. Drag this down. So that's how you are going to drag things. So चलो मैं अभी इसको नाम देता हूँ ताकि तुम्हें easily समझे. Slide 1. I'm adding a text. चलो I'm adding a symbol. So मैंने यहाँ smiley symbol डाल दी. This is a slide 3. ठीक है. Now I want to move that slide. तो यहाँ numbers दिखेंगे. Hey Nancy. Drag this up. Because slide number drag this up. So you guys can see अभी slide number 3, slide number 1, and this is your slide number 2. So I am just changing the name to it. The slide number 1. Okay. Now this is your slide 2. And this is your final image. I will be writing over here. Thank you. Okay. So these are the different types of slide you guys can use it. Okay. Now let us see what are the different things we can do it in the slides. So
I'm just making a random slide now. So what are these slides? Basically, I'll just name it like Impress, my name, that is my name, because I am teaching my code, LBLIVE. So this is my code. I am from Unacademy. Okay. So that is basically the details about me. So ये मैंने यहाँ लिख दिया. And the next slide is basically what are we going to do. So मेरे पास अभी यहाँ 6 images नहीं है, वो 6 चीजें नहीं है, तो I'll be just making sure कि कुछ add हो जाए. So I'll just add Ganesh because I have few pictures of Ganesh. So I'll just add a Ganesh का picture. So how to add a Ganesh का picture? You can see these icons over here. ये छोटे छोटे icons हैं यहाँ. Insert a table, insert a chart, insert audio and video, and insert the image. अगर तुम्हें यहाँ नहीं दिख रहे हैं तो you guys can add from the insert as well. So insert image ये भी है, और हमारे पास शॉर्टकट अवेलेबल भी है, ये वाला insert image. So इस पे क्लिक करोगे तो वो पॉपअप ओपन होगा, डायरेक्टली पॉपअप ओपन होगा, एंड तुम्हें जो ऐड करने हैं तुम यहाँ से ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल गणेश की इमेज, वेयर इज द गणेश का इमेज? Yeah, so you can see the Ganesh ka image. I have added Ganesh. I am adding one more nature ka image. This is also a Ganesh, right? यहाँ तुम्हें वो छोटा सा गणेश दिखेगा. So again image. Do I have more Ganesh ka pictures? No, I don't have more such pictures. So we have added 3 images. अब मेरे को इसके add के जगह नीचे के image के जगह पे I need to write a content. So I'll write content like green Ganesh, and I make it like in the center line. I don't want this to be bullet, so I'm deleting the bullet. So I need like eco-friendly. And मेरे को इसको भी center line करना है. So control all center line. So delete. Again, I just want a result. So I want to have the center line. So that's how you guys going to make one of the presentation. ठीक है. अभी यहाँ तो मैंने एक आइकन ऐड किया, राइट? एक इमेज, ये आइकन ऐड किया, तो तुम्हें इसको कलर चेंज करना है, तो यू गाइस कैन चेंज दिस कलर फ्रॉम दिस property tabs. For example, I don't want bluish color, I want yellowish color. So yellowish color उसकी border बन गई, बट मेरे को उसका खुद का कलर yellowish करना है, तो yellow हो गया ना. अभी मेरे को उसकी आंखों का कलर छोटा चाहिए. आंखें बन रही नहीं बन रही है, आंखें का कलर भी सेम रह रहा है. सो आंखों का कलर मेरे को ब्लैक चाहिए, ये हो गया. मेरे को उसकी विड्थ थोड़ी सी मोटी चाहिए, बन गया. और क्या है मेरे पास? So you guys can change those things from your directly from the properties. So मुझे जो जो कलर चेंज करना था मैंने वो कलर चेंज कर दिया. अगर मुझे शैडो चाहिए, शैडो enable. You guys can see the shadow, right? So that's the shadow. I'm adding one more slide. So you guys can add a slide from the slide and insert a slide. So I just make something like this. So this is slide number 4. And then मेरे को यहाँ slide number 4 में लिखना है लोगों के नाम. For example, I'm writing खुशी का नाम, then I'm writing Nancy का नाम,
then I'm writing सलोनी का नाम, then I'm writing Safiq in my class, Anas, Safiq. So मैंने राइट लिखा सफीक का नाम. So you guys can add these name wherever you want. So मैंने यहाँ तुम सारे बच्चों का नाम लिख दिया जिसका हमको नाम याद है. ठीक है. So home button and this. And मैं यहाँ लिख रहा हूँ names of kids. ठीक है. And at the end, ये वाली slide last में होनी चाहिए. तो I'll be writing at the end, and I need a text, right? So I need a text teaching. And मेरे को यहाँ क्या लिखना है? Thank you. चलो, ये तो नॉर्मल चीजें थी जो हमें ऑलरेडी आती हैं. बट अभी हम देखेंगे कैसे स्लाइड शो करना है. सो इन द स्लाइड शो यू गाइस कैन सी स्लाइड शो, राइट. अभी स्लाइड शो कस्टम स्लाइड, इस पेज से स्टार्ट करो तो वो इस प्लेस से स्टार्ट हो जाएगा. स्लाइड शो फर्स्ट स्लाइड से करना है तो फर्स्ट से होगा. एंड देन व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी जस्ट प्रेसिंग द एंटर बटन. एंटर, नेक्स्ट स्लाइड, एंटर, नेक्स्ट स्लाइड, enter next slide. But this sounds a little boring, right? बहुत boring लग रहा है because कोई move नहीं हो रहा है. So we need some movement in the text and the items, right? So वो कैसे करेंगे? So go and select, उस पे select करो. ठीक है. So let's see. यहाँ कुछ properties हैं. Glow, area, paragraph, character. These are the some properties. So तुमने क्या करना है? व्यू स्लाइड ट्रांजिशंस. सो तुम्हें दिखेगा कि स्लाइड ट्रांजिशन कैसे होगा. फॉर एग्जांपल आई जस्ट यूज वाइप. तो देखो वाइप कैसे होते आ रहा है. व्हील, अनकवर, बॉक्स. वो सिर्फ तुम्हें यहाँ दिखेगा कि वो हो रहा है बट हुआ नहीं. तो वो कैसे दिखेगा? तब जब होना है तो इस पे तुम क्लिक करोगे, करंट स्टार्ट फ्रॉम द करंट स्लाइड. सो वो अपने आप वैसे आएगा. ठीक है. सो मैं यहाँ पे शेप पे क्लिक कर रहा हूँ. सी दिखा, डिसॉल्व, सर्कल्स, डायगोनल, टाइल्स, डायगोनल, सर्कल्स. अप्लाई करना है तो कर लो, नहीं करना है तो छोड़ दो. ठीक है. तुम यहाँ एक और आइकन देखो रहे हो, एनिमेशन. सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें सिलेक्ट करना है किसी चीज को एंड देन ऐड एनिमेशन. सो इंसर्ट में है कि स्लाइड में है एनिमेशन, कि स्लाइड शो में है, किसमें है? एनिमेशन पे क्लिक करते हैं, चीज पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी दी एड इफेक्ट. ओके. सो फॉर एग्जांपल आई वांट दिस इमेज को ऐड एनिमेशन. तो क्या करना है? सो कौन सा एनिमेशन करना है? फ्लाइन, वेजिटेरियन. सो यू कैन सी प्ले करते हुए दिखेगा वो कैसे आ रहा है. सो तुम्हें बॉक्स की तरह आना है. सो प्ले करो, वो दिखेगा बॉक्स की तरह. ओवल,
ठीक है, ये मेरे को ऐड करना था, हो गया इस पे ऐड। अब मैं इस पे ऐड कर रहा हूँ, ये इस पे ऐड कर रहा हूँ एनिमेशन, आई वांट अ प्लस। ठीक है, नाउ इस इमेज पे ऐड कर रहा हूँ मेरा इमेज वाइब। कूल। चलो अभी हम इसी स्लाइड को देखते हैं यहां से कैसे दिखेगा। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्लाइड 1। सो तुम नेक्स्ट एंटर प्रेस करो, देखो, ए नाइस नाइस। सो अभी अच्छा लग रहा है राइट, वो पॉपअप होते आ रहा है हमारे साथ। पर जब मेरे को ये टेक्स्ट करना है, सो आई बी यूजिंग दिस स्क्रीन एड एनिमेशन। अब मेरे को क्या ऐड करना है स्क्रीन टेक्स्ट पे, एनिमेशन पे। सो आई वांट चेक बॉक्स, नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। सो आई कैन चेंज इट। अभी एंट्रेंस के अलावा आई कैन मेक इट टू मोशन पाथ्स। मोशन पाथ्स मतलब क्या करेगा, वो एक पॉलीगॉन से जाएगा। सी प्ले, कुछ नहीं हो रहा है। So add animations, उस पर क्लिक करो, emphasis, change font color। कौन सा font color चेंज होना चाहिए, देखो वो अपने आप font color चेंज हो रहा है। So that is how basically you guys can add the animation and the slide transition। Slide transition is nothing but कि तुम एक पेज से दूसरे पेज में जब जाते हो तो तब कैसा होना चाहिए, या एक पेज से दूसरे पेज में आते हैं तो वो कैसा आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे वो क्यूब की तरह आते हुए दिखना चाहिए। तो क्यूब, ओ नाइस। डिसॉल्व, क्या है वो, डिसॉल्व, ग्लिटर। तो तुम्हें जैसे चाहिए तुम वैसे उसको यूज कर सकते हो। न्यू स्लैश यो, एंड मेरे को फाइनल में यहाँ पर आना चाहिए कुछ अच्छा सा वाला, एंड मेरे को इसमें साउंड होना चाहिए क्लैप्स का। डू वी हैव अ क्लैप या अप्लॉज? तुम्हें सुनाई देगा ये, तो तुम्हें सुनाई दिया, क्लैप सुनाई दिया। तो हम इसको देखते हैं स्टार्टिंग से। तो होता है स्लाइड शो, स्टार्ट फ्रॉम द स्लाइड। अभी देखते हैं हम इसको कि कैसे ये चलना चाहिए। इम्प्रेस, एंटर, वाओ, ओपन हुआ, वाओ, पिक्चर साइज, रिजल्ट्स खुला, ग्रीन आया, वो गायब हो गया। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। वो नेक्स्ट स्लाइड को न्यू स्लैश की तरफ ओपन हुआ। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। भाई खत्म हो गया तो हमने यहाँ तालियां बजाई। That is your slide transition and the animation। फिर से तुम एंटर करोगे तो वो बोलेगा क्लिक टू एग्जिट प्रेजेंटेशन एंड दैट इज डन। यहाँ पर क्या हो रहा था कि तुम उसको सेट कर रहे थे, लाइक तुम उसको क्लिक करवा रहे थे, राइट, तुम उसको सेट करवा रहे थे। पर अभी हमें को उसको सेट नहीं करवाना, वो अपने आप चलना चाहिए, वैसा करना है।
Like it should run automatically on its own. तो अभी हम क्या करेंगे, रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग में क्या होगा, वो टाइम नीचे चालू हो जाएगा। देखो यहाँ टाइम चालू हो गया, तो जितना टाइम तुम्हें उसको रखना है रखो, एंड वो ऑटोमेटिकली अपना काम, सिर्फ तुम्हें एक बार उसको प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। लाइक डन, चेक, एंड देन वो नेक्स्ट स्लाइड पे जाए एंड नेक्स्ट हो जाए, एंड दैट इज डन। सो ये है स्लाइड रिहर्सल। अभी तुम देखोगे स्लाइड रिहर्सल हो गया है, सो तुम अगर देखोगे तो अपने आप वो स्लाइड शो करना चाहिए, क्योंकि स्लाइड रिहर्सल हो गया है। सो स्टार्ट फ्रॉम स्लाइड 5। वेट, यू कैन सी माय हैंड्स ओवर हियर। चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, देखते हैं। So there must be some issue. Slideshow rehearse timing. चलो अभी तो शायद हो गया है, लेट्स सी हो रहा है कि नहीं। अब होना तो चाहिए। देखो अब मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो अपने आप होगा। राइट इज लाइक दैट। चल हो जा। हम फिर से करते हैं स्लाइड शो को रिहर्स टाइमिंग। ओके, हमें यहाँ से नहीं ओपन करवाना, मैं यहाँ से ओपन करवाना। तो स्लाइड शो रिहर्स टाइमिंग, वो टाइमिंग चालू हो गया। ठीक है, टाइमिंग के 3 सेकंड के बाद नेक्स्ट। यहाँ टाइमर आ रहा है, नीचे वाले पार्ट पे टाइमर आना चाहिए। देखो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। यहाँ नेक्स्ट करेंगे एंड क्लिक एंड एंटर। तो तुम्हें यहाँ दिखेगा, इसको हम देखते हैं रन करके फिर से। न्यू, नहीं, कस्टम इज डिफरेंट। पता नहीं, ये या तो मेरे विंडोज के वजह से इशू होता होगा।
वरना ये अपने आप होना चाहिए because of Windows probably there will be some issue with it. So ठीक है, तो अभी हम इसको इसी को ही यहाँ से करेंगे. So एडवांस स्लाइड 1 सेकंड के बाद, एडवांस स्लाइड 2 सेकंड के बाद, राइट 2 सेकंड्स, चलो 5 सेकंड्स के बाद, एडवांस स्लाइड 2 सेकंड्स के बाद. यहाँ एडवांस स्लाइड तो होगा नहीं, यहाँ बंद होना चाहिए, तो कब 5 सेकंड्स के बाद. लेट्स सी होता है कि नहीं अपने आप से. हो गया. प्रोबेबली एनिमेशन की वजह से कुछ तो इशू हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पिक्चर्स पे एनिमेशंस ऐड किया, राइट. एनिमेशंस की वजह से कुछ तो इशू हो रहा है जो अपने आप होना चाहिए बट हो नहीं रहा है. तो इसको हम प्ले करते हैं इसी स्लाइड से. देख क्या वो अपने आप हो गया फिर. सो या दैट इज बेसिकली द रिहर्स टाइमिंग. स्लाइड शो कैसे दिखना चाहिए, तुम्हारा स्लाइड मैन्युअली चेंज होगा, माउस पॉइंटर विजिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, माउस पॉइंटर एज अ पेन विजिबल होना चाहिए क्या. तो माउस पॉइंटर एज अ पेन दिखा रहा हूँ मैं, कैसे होता है. सो स्लाइड शो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, एंड तुम्हें दिख रहा है पेन की तरह दिख रहा है मेरा पेन, मेरा माउस नाउ इट्स लुकिंग लाइक अ पेन. ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग श्योर कि स्लाइड शो कैसे चल रहा है. सो अभी टूल्स में आते हैं. टूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. फॉर एग्जांपल स्पेलिंग. सो जैसे तुम्हें स्पेलिंग दिख रहा है, एज सून एज आई प्रेस ऑन द स्पेलिंग, सो यहाँ तुम्हें लैंग्वेजेस दिखेंगी. व्हिच लैंग्वेज डू यू वांट टू चूज. सो डू यू वांट टू सी अ स्पेनिश लैंग्वेज, डू यू वांट टू हैव अ इंग्लिश. इंग्लिश में वी हैव मेनी डिफरेंट टाइप्स. इंग्लिश इंडियन टाइप, इंग्लिश. So I need to have a English India. Just using English India, वो automatically select हो रहा है. So eco-friendly Ganesh नहीं, Ganesha is the right word for them. So Ganesh लिखना है कि Ganesha लिखना है. अगर तुम्हें change करना है तो ignore corrected and वो जाएगा next वाले slide पे. अभी सलोनी का नाम उसको नहीं मिल रहा. सलोनी का नाम उसको दिख रहा है salon. So I want to add this word into the dictionary in my future use. So जब भी मैं सलोनी का नाम लिखूंगा तब वो राइट जाना चाहिए. जैसे यहाँ सफीक, अभी सफीक को भी इसको नाम एंटिक दिख रहा है. So I don't want that to be happen. So I need that word to be added as the. So अभी खुशी का नाम इसको सुशी दिख रहा है. So I want to add that word as the dictionary. So तुम्हें अभी एक चीज फर्क. Yeah, I want to search it from again the beginning. So let's see. अभी उसको मेरा नाम भी गलत दिख रहा है. ला स्पेस खान, ला हाइफन खान, खान. So I want them to add into my dictionary. Again add it to my dictionary. Okay, उसको पूरा डॉक्यूमेंट दिख गया. So अभी तुम्हें गणेश की जगह पे सारी जगह पे गणेश करना है तो करेक्ट ऑल. तो हो गया वो अपने आप
तुम्हें कोई डाउट नहीं है बताएगा एंड क्लोज करना है हमें फिर। सो यू कैन सी दैट कि अभी तुम्हारे नाम के नीचे रेड लाइन तो है, बट अगर तुम फिर से टूल चेक करोगे फॉर द स्पेलिंग, सो वो बोलेगा कि कोई एरर नहीं है बिकॉज दीज वर्ड आर ऑलरेडी देयर। So I have added all those one to my dictionary, that is why it is not showing any issue over here. ठीक है, अभी मैं कोई और अलग सा नाम डालूं, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास आ रहा है, अब मैं इसके जगह पे नाम डाल रहा हूँ ग्रीष्मा। तो अभी ग्रीष्मा के नाम देखोगे तो यहाँ अगर स्पेलिंग चेक करोगे तो वो तुम्हें एरर दिखाएगा बिकॉज देयर इज नो नेम सच एज ग्रीष्मा। सो उसको मेरे को ऐड करना है डिक्शनरी में, एंड डिक्शनरी में ऐड हो गया एंड क्लिक ऑन ओके। तो क्लोज। अभी मैं फिर से टूल्स पे क्लिक करूंगा स्पेलिंग्स, सो मेरे को ग्रीष्मा का एरर नहीं दिखाएगा बिकॉज मैंने उसको ऐड करके रख दिया है ऑलरेडी। ठीक है, समझा तुम्हें? So that is basically how you guys can add up things. अगर तुम्हें इस पे भी एनिमेशन डालना है, फॉर एग्जाम्पल इस पे क्लिक करो एड एनिमेशन, तो एनिमेशन क्या करना चाहिए? सो आई वांट दैट एनिमेशन टू हैव अ मोशन पाथ 4 पॉइंट स्टार। सो हम प्ले करके देखते हैं वो कैसे दिख रहा है। देखो वो चलने लगा, राइट। अब मेरे को इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए, वो इतने टाइम में नहीं खत्म कर पा रहा। I wanted to increase with a little bit more time. So for example 3.5 के जगह पे I needed to complete in 10 seconds. So I just play it. अगर मैं स्लाइड को देखूं ओपन करके, देखो वो चलने लगा, राइट। अगर मेरे को चाहिए वो ऑन क्लिक नहीं, वो ऑटोमेटिकली चले। सो विथ प्रीवियस, यहाँ स्टार्ट प्रॉपर्टी में विथ प्रीवियस, एंड जैसे मैं स्लाइड शो को ओपन करूंगा, स्लाइड शो स्टार्ट फ्रॉम द करंट स्लाइड, तो वो अपने आप चालू होने के बाद अपने आप मूव होगा विदाउट आई एम प्रेसिंग एनी बटन। Okay, so that is basically you can add animation and these slide transitions. अभी these are some properties हुए हैं तुम्हें slide की properties. For example पूरे slide पे click करोगे तो तुम्हें यहाँ slide की property दिखेगी। तुम्हारा screen कैसा है? 6:9 के 6 developer, छोटा size चाहिए, so you guys can change those sizes as your help, as your needed. ठीक है, 16:10 जैसे छोटा वाला चाहिए, दैट इज जापानीज स्पोर्ट्स कार जो लंबे लंबे होते हैं, सो वैसा चाहिए। सो यू गाइस कैन मेक एक लेटर। सो दीज आर द डिफरेंट वर्जन्स यू गाइस कैन यूज। लैंडस्केप, अभी तुम्हें लैंडस्केप चाहिए कि पोर्ट्रेट चाहिए? तो पोर्ट्रेट वर्जन ये है, लैंडस्केप वर्जन ऐसा है। बैकग्राउंड में कोई कलर चाहिए, हाँ देखो, तो यू गाइस कैन यूज ग्रेडियंट्स। सो ग्रेडियंट्स मेरे को चाहिए रेड कलर से, ग्रेडियंट चाहिए टू दी ब्लूइश कलर, सो रेडिश टू ब्लूइश, रेडिश टू येलोइश टू ब्लूइश, येलोइश टू ग्रीनिश, ऑरेंज टू ग्रीनिश, व्हाटएवर यू वांट। तुम उसको ऐसा ग्रेडियंट इफेक्ट दे सकते हो। हैचिंग,
अभी तुम्हें कलरिंग नहीं चाहिए, तुम्हें उसमें थोड़ा सा लाइंस चाहिए, लाइंस, तो वो हैचिंग कर देगा। पैटर्न, तुम्हें कोई पैटर्न ऐड करना है। So you guys have the homework for the next class. You should make a presentation with a slideshow and you guys have to send it to me. Okay. So फिर तुम्हें पेड पैटर्न कौन सा देना है, समझ रहे हो? My LibreOffice writer is little bit hanging. Okay, अटक रहा है. There is some issue with the LibreOffice. Okay. Okay, give me a second. ये कहीं ना कहीं मेरा इम्प्रेस अटक रहा है. Okay, अभी ठीक है. So now you guys can change this stuffs. Like तुम्हें अभी slide layouts पता है, तो background पता है, what is the background, how to change the background. You guys know how to edit things, how to add things. So this all would be taught in the theory lectures as well. So you guys should remember all those things. Okay. Again it's hanging, I don't know why. Any questions to anyone? So I am going to make more slides. So I just have to add a slide. So how to add a slide? Either you can go in a slide option, new slide. Okay. Or do we have a shortcut over here? यहाँ कोई shortcut है? Yes, ये देखो. So कौन सी slide तुम्हें चाहिए? I need empty slide. So I just click on a blank slide. So वो automatically add कर देगा. ठीक है? I don't know. Right now my LibreOffice is not working due to some reason. I'm so sorry for the sounds. Mama is cooking food. So I'm just adding one more slide now. I'm just opening the slide first. PPD. कहीं पे सेव होना चाहिए. But now this is showing me the PPD वो वाला. So I'm just opening it. So I have just recently opened all the ये देखो यहाँ ये सारी चीजें हो गई थी but मुझे दिख नहीं रही थी because of the issues. So add slides. किधर गया slide वाला button? A new slide.
So now a new slide, I'm adding a pictures. देखो कुछ ऐसे दिख रहा है. This is how basically you guys can add an image. And इसके बाद image की properties यहाँ तुम्हें दिख जाएगी कि तुम्हें image कैसे दिखना चाहिए. Image पे click है and यहाँ all the properties of the image. ठीक है. So that is the image, and I'm just adding one more slide. So I have to add or duplicate a slide, right? So duplicating a slide, slide option, duplicate page. So मैं इसको delete कर दूँगा. I'll add one more image from my folders. So yep, this is your basically the Impress. कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें नहीं आती, जो तुम्हें नहीं आ रहा था, and you wanted to learn. So I'm just adjusting my images right now, and this is done. So how many of you know that we are currently running the timings? So you see, so we are running with the two batches for the class 10th and the class 9. For the class 10th, we are having this batch, that is your social science and mathematics match, and the another batch for the class 9th is for English and computer science. I am taking computer science on the Unacademy platform at 8 o'clock every day. Any questions to anyone? I'm open up here. If you guys are looking for a plus or iconic subscription, use my class, that is LBLIVE. Use my code for the code to enroll for that. And even if you are going for the special free classes, here you guys can unlock those free classes with my code, that is LBLIVE. This code would be running on every Unacademy platform for iconic subscription and for unlocking the free course. Any questions to anyone? Like how to do this and how to do that, I have already taught. If you really guys have any questions, I am open here. No questions to anyone? So I hope you guys will be doing all the homeworks given by me. राइट कर लोगे ना सारा होमवर्क जो मैंने दिया है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए? If you want to add something from the, like anything you want, you guys can add. For example, if you want to have a notes,
So notice basically for the presenter, this is slide last. So जब मैं present करूँगा ये सारी चीजें तुम्हें नहीं दिखेंगी. So I just make sure दिखे ना. You guys can see it. I'm just right now showing you guys slideshow of the current slide. तो देखो तुम्हें यहाँ नहीं दिख रहा. ये तुम्हें नहीं दिखेगा जब वो कोई present करेगा on the. This is would be only totally visible to the presenter who is presenting the slides. Okay. So these are the two classes and so basically these things are only visible to the presenter. For example, इसको कुछ चीजें याद रखनी हो तो that person would basically be looking at this part to have a notes out of it. So now तुम यहाँ कुछ देख सकते हो कि ये move हो रहा है, right? So this is basically telling you कि तुम्हारा position कहाँ है. So तुमने कहीं और क्लिक किया तो तुम्हारा माउस कहाँ है. So that is all about the LibreOffice Impress. If you guys have any questions, reach out to me on the platform, Unacademy platform. Okay, so yeah, bye bye. Taking the leave from you guys. See you on Sunday with the LibreOffice Calci. Keep me updated with whatever you want to know. जो भी तुम्हें चीज लर्न करनी हो कैलसी में से, so keep updating me on the Telegram channels so that I'll be taking those topics more efficiently over here. And I hope you all guys are joining my courses online. I mean, like on an academy. So we are going to have all these lectures as the LibreOffice. So